आज फर्स्ट टाइम टाट में कैंप कर रहा हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सी एक्साइटमेंट भी है। हर तरफ से ओपन है ये। हाउ थेरेप्यूटिक। ये फायर स्टार्टर का बहुत अच्छा काम करती है। An unexpected guest has joined me. कुछ तो है जो इसे दिख रहा है और मुझे नहीं। वहाँ कुछ है कि नहीं है, बस कोई रात को डेंजर ना हो। करोल टिब्बा की कहाँ जाना है? यहाँ के लिए?
सो इट्स टाइम टू मेक द फायर, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम है मेरा टाट कैंपिंग में, सो इसलिए उसको समझने में और सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग गया। अंधेरा ही हो गया पूरी तरह। अब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मुझे रात में काटनी पड़ रही हैं। थोड़ा डर तो लग रहा है बट अब आदत सी हो गई है। How therapeutic. I think it's done. Yep, it's done. पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है लकड़ियाँ काटने में। आग जलाने तक का वेट नहीं हो रहा था, इसलिए पराठे जो मैंने नीचे से पैक कराए थे, जो लकीली मैं खाना भूल गया था रास्ते में, अभी काम आ रहे हैं। उसे खाने के बाद थोड़ी एनर्जी लेने के बाद फिर आग जलाऊँगा एंड देन उसके बाद डिनर, देन उसके बाद गुड नाइट स्लीप। ये कॉटन बॉल्स जिसमें वैसलीन लगा के मैं घर से पैक करके लाया था, ये फायर स्टार्टर का बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप एज ए टेंडर यूज़ कर सकते हो। कॉटन में वैसलीन लगाकर उसे ऐसे बॉल्स की तरह बनाकर एंड देन उसे एज ए टेंडर यूज़ करके, क्योंकि आग बहुत जल्दी पकड़ती हैं। और अनफॉर्चुनेटली लाइटर या माचिस लेना भूल गया था, इसलिए अब बर्नर से आग लेनी पड़ रही है।
आज फर्स्ट टाइम टाट में कैंप कर रहा हूँ। हर तरफ से ओपन है ये, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सी एक्साइटमेंट भी है, तो लेट्स सी। An unexpected guest has joined me. There's always a dog. हर ट्रैक पे कोई ना कोई डॉग मिलता ही है, जिससे बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। कुछ तो है जो इसे दिख रहा है और मुझे नहीं। बार बार इधर उधर देख रहा है। आई डोंट नो वहाँ कुछ है कि नहीं है। नाउ इज गॉन। I'm always lucky in the mountains. I always found a dog. इस बार भी इसे भी नींद आ रही है। चाँद निकला हुआ है, तारे भी निकले हैं, मौसम साफ़ है। बस कोई रात को नींद अच्छे से आ जाए और कुछ डेंजर ना हो। गुड नाइट। सुबह के 9 बज गए। मैं तो उठ गया हूँ, पर ये अभी भी सोया हुआ है। लकीली रात को नींद भी अच्छी आ गई और कोई डेंजर भी फील नहीं हुआ। सो फर्स्ट टाइम कैंपिंग लाइक दिस वेंट सक्सेसफुल। काफ़ी एक्साइटेड था मैं इस तरह की कैंपिंग के लिए, इस तरह की ओपन कैंपिंग के लिए। थोड़ा डर भी था, थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी, बट फाइनली आई डिड इट। आई होप इन फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही कैंपिंग करता रहूँ, ओपन लाइक बुशक्राफ्ट कैंपिंग, without a shelter, just with a sleeping bag or without a sleeping bag, I don't know. ये मैंने रखा हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, पर लकीली इसकी नीड नहीं पड़ी। Also, I have the real bodyguard with me.